students, in this lesson we will discuss about the conditional sentences. What are conditional sentences? Conditional sentences are used to express situations and their possible results. Like conditional sentences may we have two clauses, the if clause and the main clause. We have a condition in the if clause and we have result in the main clause. So if clause describes the situation and main clause describes the outcome. For example, if it rains, I will stay at home. So if clause has a situation and main clause has a result, I will stay at home. Right? Next, zero conditional. The first type, general truths, structure. If present, if clause in present simple and the main clause in the present simple. इफ क्लॉज होती है जीरो कंडीशनल में, वो भी प्रेजेंट सिंपल में होती है, और जो मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होती है. यूजेज ऑफ द जीरो कंडीशनल विच टेल्स अस द जनरल ट्रूथ्स, scientific facts, general truths and habits. For example, if you heat water it boils, so it's a general truth, it's a fact or it's a scientific fact. So if clause भी present simple में है, main clause भी present simple में. If you eat too much they gain weight. If people eat too much they gain weight. If the sun sets it gets dark. So zero conditional में जो if clause है और main clause है वो दोनों simple sentences में होते हैं. First conditional. The first conditional are the real future possibility. Structure if clause present simple में होती है and main clause में will and base verb means first form of verb होती है. Usage क्या है इसका? Real and possible situations in the future. Example, if I study hard I will pass the exam. If it rains we will cancel the trip. So next example is if you come early we will watch a movie. So जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है जिसमें इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में होती है और जो मेन क्लॉज है वो विल और बेस वर्ब होता है. नेक्स्ट, सेकंड कंडीशनल. सेकंड कंडीशनल में हमारे पास इमेजिनरी प्रेजेंट और फ्यूचर होता है. इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जो इफ क्लॉज होती है वो आपको पास्ट सिंपल में मिलती है और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड एंड बेस वर्ब मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. यूजेज क्या होता है? अनरियल और अनलाइकली सिचुएशंस, इमेजिनरी प्रेजेंट और फ्यूचर. लाइक if I were rich I would travel the world, right? So it's an imagination, right? Imaginary present and imaginary future. If I were rich, अगर मैं rich होता, I would travel the world, तो मैं पूरी दुनिया को visit करता. So it's not reality, it's imagination. If she studied more, she would succeed. So it's also unreal or imaginary. If I were you, I would take this opportunity. So use were instead of was with I, he, she in the formal English. Next, third conditional, which tells us about the unreal past structure. If क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है एंड वुड हैव, और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल आता है. इसका यूजेज क्या है? टॉकिंग अबाउट पास्ट सिचुएशंस दैट डिडंट हैपन. रिग्रेट्स एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. If I had studied I would have passed the exam. If they had left earlier they would have caught the train. So it's about the unreal past. If she had known she would have helped, right? So if clause में past perfect tense होता है और main clause में would have और past participle होता है. Next, the mixed conditionals. When the time in the if clause and result clause is different, common types past to present change होता है. if clause past perfect होती है तो वो would और base verb साथ यूज होता है. if I had studied I would be successful. Alright, there are some important rules and notes for conditional sentences. Common rule, use a comma when the sentence starts with if clause. अगर sentence if clause से start हो रहा है तो if clause और main clause के दरम्यान में आप comma use करते हैं. No comma if clause is second. अगर if clause second number पे आती है और main clause पहले आती है तो we don't use comma. If not is equal to unless. Unless you study you will fail. If you do not study you will fail. So both these words if not and unless meaning same. Next, important rules and notes.
Modal verbs in the conditionals. Instead of will, would, we can use can, may, might, could, should. Example, if you study, you can pass. If I were rich, I could help you. Imperatives and conditional, if you see him, call me. So it's a basic summary. There are four types of conditional: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. In zero conditional, sentence structure क्या होता है? इसमें जो if और if वाली क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होता है और जो मेन क्लॉज है उसमें भी प्रेजेंट टेंस होता है एंड वी यूजुअली टॉक अबाउट फैक्ट्स इन द जीरो कंडीशनल. जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें इफ क्लॉज में प्रेजेंट आता है और जो मेन क्लॉज है उसमें विल यूज होता है. सेकंड क्लॉज में इफ क्लॉज में पास्ट आता है और मेन क्लॉज में वुड यूज होता है. एंड थर्ड क्लॉज में इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है एंड मेन क्लॉज में वुड हैव यूज होता है. राइट. थैंक यू सो मच. इट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.